अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। थ्योरी ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बेसिकली दिस इज़ अ सिविलाइजेशनल अप्रोच टू अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिक्स। सिविलाइजेशनल अप्रोच है, उनको अंडरस्टैंड करते हैं जियोपॉलिटिक्स को, ठीक है। सब द थ्योरी ऑफ clash of civilization was presented by Samuel P. Huntington in his book The Clash of Civilizations and the Remarking of the World Order in early 1990s। जैसे हमने पहले पढ़ा, दिस इज़ अ सिविलाइजेशनल अप्रोच टू अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिक्स। ये आप देख लें कि जियोपॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ये यूज़ होती है बेसिकली। According to Samuel P. Huntington, there were 9 civilizations in the world। 9 civilization हैं, एग्जिस्ट करती हैं इन दिस वर्ल्ड में, ठीक है। सबसे पहले है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसके बाद है इस्लामिक सिविलाइजेशन, दैन चाइनीज़ सिविलाइजेशन, दैन ऑर्थोडॉक्स रशिया, कॉकसस एंड ईस्टर्न यूरोप सिविलाइजेशन। उसके बाद 5 पे है हिंदू सिविलाइजेशंस, उसके बाद है 6 पे लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन, 7 पे अफ्रीकन सिविलाइजेशंस, 8 पे बुद्धिस्ट सिविलाइजेशंस, 9 पे जैपनीज सिविलाइजेशंस। नेशंस सो एफिनिटी विद देयर नेशन फेलोज, ठीक है ना। ऑलवेज आप देखेंगे पाकिस्तानी है, ये वो एफिनिटी वो शो कराएगा, एफिनिटी पाकिस्तानी के लिए इन फॉरेन में या कहीं भी ना। अगर एक इंडियन सामने आ गया या कोई और कंट्री का बंदा सामने आ गया, ठीक है, आप इधर से भी एग्जांपल लगा लें कि जो है ना कि हमारी कम्युनिटी के होते हैं, अदर कम्युनिटी वाले पे उसमें भी एफिनिटी ज़ाहिर होती है, ठीक है ना। आपको देयर वर नो चांसेस ऑफ मर्जर ऑफ वेरियस सिविलाइजेशंस। जो सिविलाइजेशन है ना, वेरियस सिविलाइजेशन, उनकी जो मर्जर की है, उनकी इकट्ठे होने की तमाम रेयर चांसेस होती हैं, ठीक है। इन अप्रैल 1894 में पीपल रैलीड इन सराजेवो, द कैपिटल ऑफ बोस्निया, वेविंग द फ्लैग्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड टर्की, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर 16, 1994 में लॉस एंजल्स 70,000 मैक्सिकन्स मार्च्ड beneath a sea of Mexican flags, protesting denial of state benefits to illegal immigrants in US। इसका जो द सेंट्रल थीम है ना, वो है द कल्चर एंड कल्चरल आइडेंटिटीज़ which at the broadest level are civilizational identities, are shaping the patterns of cohesions, disintegrations and conflict in the post-Cold War world, ठीक है ना। उसके बाद मॉडर्नाइजेशंस इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग अ यूनिवर्सल सिविलाइजेशंस इन एनी मीनिंगफुल सेंस, नॉर द वेस्टर्नाइजेशंस ऑफ द नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़। जो मॉडर्नाइजेशन है ना, वो यूनिवर्सल सिविलाइजेशन नहीं आ रही उसमें ना, उसमें तो एक कल्चर है, उसको कर रहे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइडिंग फैक्टर्स क्या है जो द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस अमंग पीपल आर नॉट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, रादर दीज आर कल्चरल वैल्यूज़। जो उनकी लोगों की कल्चरल वैल्यूज़ हैं, दे आर डिस्टिंक्ट हैं, वो मुख्तलिफ है ना उनसे। तो ये एक जो इसमें गैप आ रहा है ना यूनिवर्सल सिविलाइजेशन में, वो है उसमें ना ही पॉलिटिकल है ना ही इकोनॉमिक है। पीपल डिफाइन देम सेल्फ इन टर्म्स ऑफ रिलीजन्स, लैंग्वेज, हिस्ट्री, वैल्यूज़ एंड कस्टम्स। पीपल वो कभी भी एक पॉलिटिकल या इकोनॉमिक बेस पे अपने आप को डिफ़ाइन नहीं करते, वो डिफ़ाइन करते हैं रिलीजन बेस पे, लैंग्वेज बेस पे, हिस्ट्री बेस पे, वैल्यूज़ बेस पे एंड कस्टम बेस पे। However, the most important defining and the dividing factor is religions। सबसे पहले कल्चरल कस्टम्स, वैल्यूज़, हिस्ट्री, लैंग्वेज के बाद बादशाह सबसे पहले जो है ना वो है रिलीजन। इट मीन्स अ लॉट फॉर पीपल। द वेस्ट इज़ डिक्लाइनिंग इन अ रिलेटिव इन्फ्लुएंस। वेस्ट जो है वो डिक्लाइनिंग है इन अ रिलेटिव इन्फ्लुएंस में। Asian civilizations are expanding their economic, military and political strength. Islam is exploding demographically with destabilizing consequences for Muslim countries themselves and their neighbors also। जो इस्लाम है ना, वो दिन ब दिन एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहे हैं मुस्लिम लोग। In 1990s, Christianity was 32% of the world and Islam was 20%, but Islam would be 35%.
बाय 2025 एंड विल सरपास क्रिश्चियनिटी। अभी आप देख लें कि क्रिश्चियन जो है ना मुस्लिम से ज़्यादा हैं। तो फिर जो फ्राम 2030 2025 से लेके मुस्लिम विल सरपास दैम क्रिश्चियनिटी को। ठीक है, लाइकलीहुड ऑफ क्लैश एंड द वे आउट। इनकी लाइकलीहुड और वे आउट क्या है? द वेस्टर्स यूनिवर्सल प्रिटेंशंस इंक्रीजिंगली ब्रिंग इट इनटू द कन्फ्लिक्ट विथ अदर सिविलाइजेशन, मोस्ट सीरियसली विथ इस्लाम एंड द चाइना। मैं आपको उनको बता लूँ कि जो वेस्टर्न थाट है ना वो ये है कि उनको ख़तरा, वो ये महसूस करते हैं कि ख़तरा हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम एंड चाइनीज़ सिविलाइजेशन से है और किसी से हमें ख़तरा नहीं है। देयरफॉर सर्वाइवल ऑफ द वेस्ट डिपेंड्स ऑन अमेरिकन रीफ्रेमिंग देयर वेस्टर्न आइडेंटिटी, वेस्टर्नर्स एक्सेप्टिंग देयर civilization as unique but not universal, uniting to renew and preserve it against challenges from non-Western societies. He concludes that Samuel P. Huntington ने conclude किया था that avoidance of global war of civilizations depends on the world leaders accepting and cooperating to maintain the multi-civilizational character of the geopolitics. उसके बाद है the cultural fault lines and clashes. जो tribal wars and ethnic conflicts may occur within the civilizations as they were bloody clashes between Hutu and Tutsi tribes of Rwanda in 1994. On the other hand, violence between the states and groups from a different civilizations carries with it a potential for escalations as other states and groups belonging to the same civilization rally to the support of their kin countries. Hence, a bloody clash in Bosnia, Chechnya or Kashmir could become bigger war with Russian support to Serbia and Saudi Arabia and Turkey to Bosnia. The union of two Germanies, dismemberment of USSR into Central Asian Muslim states, Baltic states and Orthodox, and dismemberment of Yugoslavia into Serbia, Croatia, Slovenia, Bosnia, Macedonia was on the cultural fault lines, and similar pressures on India. Sudan, South Sudan became the sovereign in July 2011, and Sri Lanka is also on a cultural and religious fault lines. उसके बाद है कॉपरेशन ऑन कल्चरल एफिनिटीज़। जो भी लोगों के बीच में जो कॉपरेशन है वो है कल्चरल एफिनिटीज़ पे कैसे है। कंट्रीज़ विथ कल्चरल एफिनिटीज़ कॉपरेट इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली लाइक यूरोपियन यूनियन, ECO, OIC. Thus, world at present is more Christian, Orthodox and Muslim world. Voting for Olympics 2000 in Sydney instead of Beijing was entirely on civilizational lines. उसके बाद है modernization versus westernization. Civilizations do endure and evolve, rise and fall, and buried in the sands of a time like Egyptian and Mesopotamia. Present world witness Islam as a cultural and a political phenomenon. European Union has a cultural content, a spread of Western consumption pattern like KFCs and McDonald's. Pop culture is not creating a universal civilizations. People may drink Coke, dress jeans, watch Hollywood movies, but not westernize. एक मॉडर्नाइजेशन इज़ नॉट अ वेस्टर्नाइजेशन। इसमें से ये साबित होता है कि मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन नहीं है। मॉडर्न होते हैं लोग लेकिन वो वेस्टर्न नहीं बनते, उनका कल्चरल रिलीजियस चेंज होता है, वो नहीं छोड़ते उसको। डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न economies are in a decline, giving way to Chinese and other Eastern Asian economies including India and Brazil. Though West will remain a dominant through 21st century but relatively decline with other civilization, notably China leading to a non-Western societies. The reason for a Western decline is its stagnating populations, unemployment, huge government
deficits, low saving rates, social disintegrations, drug and crime. The willingness of other society to accept the West dictates will also evaporate rapidly, and so will the West's self-confidence. A future forecasters क्या है? He concludes that Samuel P. Huntington ने conclude किया that by 2050 world economy would be like that 1800 when China was world's largest economy. As regards the Islamic world at present, there is no one to act as a core state, but he believes that Turkey has the potential to become a core state. For that, it had to shun secularism as apartheid by South Africa to lead Africa. Likelihood of clashes. Future clashes are likely to arise from the interactions of a Western arrogance, Islamic intolerance, and Chinese assertiveness. The central problem will be America's efforts to promote a universal Western culture and its declining ability to do so. There is a more likelihood of a clash between Western and Islamic, Western and Chinese, Western and Orthodox, Western and Japanese, but less likelihood between Islamic and Chinese. A glimpse of civilizational clashes of recent times. Muslim versus Buddhist in Thailand हो गया, Muslim versus Christians in Philippines हो गया, Muslim versus Buddhist in Myanmar हो गया, Muslims versus Hindus in India हो गया, Muslim versus Orthodox in Russia चीचनिया में हो गया, मुस्लिम वर्सेस जूड इन पैलेस्टीन में हो गया, मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन इन साउथ सुडान, ईस्ट तैमूर, चाइना, कीनिया एंड चाड. In the past also, same forces did motive the Ottoman to capture Serbia in 1389. After Battle of Kosovo, and the Muslim populations of Kosovo, which was 67% in 1964, rose to 90% in 1991. The next 100 years by George Friedman. George Friedman ने कहा है कि next 100 years में क्या होगा. In the line with Samuel George Friedman, an American research scholar, in his book titled The Next 100 Years, also talk about the future international clashes based on a civilization of our lives. According to whom, Turkey, Poland, Japan, along with Mexico would be emerging again. Turkey at present is 17th and Mexico is 15th economy. They will develop significantly in future. By 2020, Turkey will emerge as one of the top 10 economies of the world. However, Turkey rose 16th positions in December 2019. By mid-2040s, Turkey will be a major regional power, also having an influence in Southeast Europe like Bosnia and Albania. Japan will be again an important power in space, maritime and hypersonic missiles. By the middle of the century, Turkey's influence will extend deep into Russia, Balkans, when it will collide with Poland and the rest of the Eastern Europe coalitions like Romania and Hungary. As regards Mexico, he says a growing economy of Mexico will threaten US. Mexico will be within a top 10 by 2080 with a population of 100 million. By 2070, Mexicans will be the second dominant populations in US after the English speaking. Mexicans will also go to the parliament of the US. US will be forced to send back the Mexican immigrants. Mexico will protest the American return of Mexican. Mexico will assert for a unification of southern US, within which US captured in 1848, and time will come when US will be facing internal unrest and both US and Mexican armies would be facing each other. To what extent Samuel P.'s predictions are coming true? Samuel P.'s predictions are coming true, particularly with a reference to European units move into Ukraine and deposing Mr. Yanukovych, pro-Russian elected president of Ukraine in March 2014, and after Russian annexations of Crimea and
autonomous regions of Ukraine, with ethnic Russians in majority, after holding a referendum there. European Union and NATO made almost all the ex-Warsaw Pact countries its members in a bid to block any future move to Russia to bring these under its political influence. Russia and China have created a Shanghai Cooperation Organization (SCO), which is considered by some political analysts as NATO of the East. This all appears to be a start of new Cold War between the Western and Russian civilizations. Critical analysis and conclusion. Conclusion. Samuel has nicely and diligently presented his theory and substantiated his point of view in the best possibly analytical manner. He has also come out with a most pragmatic, realistic, just proposal to avoid any future clash when he says, avoidance of a global war of civilization depends on world leaders accepting and cooperating to maintain the multi-civilizational character of a global politics. However, this is also a reality that most of all the large-scale previous international clashes were on account of economic injustice and exploitations by the powerful of the weaker nations of the world. This seems very relevant in case of the two world wars in which the belligerents notably belonged to the same Western civilization. For instance, Germany and Italy versus UK, France and USA, where religion did not play any role, as Turkey sided with Germany in the First World War. Like politico-economic dynamism also appears to be in the forefront during Cold War between USA and USSR, in a Korean War and Vietnamese War. No doubt cultural and religious prejudices did play an important role in bringing the nations at daggers drawn, but economic injustice and exploitations appear to be very much at the base of all the historic bloodsheds. Had nations and people belonging to a different cultural, religious and or linguistic origins exhibited fair play and justice, and not justifying all means to exploit in the name of national interest, there would have been a little reason to go for war. इसमें से क्वेश्चन जो राइज होता है वो ये है, टू व्हाट एक्सटेंट द थ्योरी ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रिमार्किंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर as presented by Samuel is relevant in the present day politico-economic landscape of the world. Please discuss critically. Thank you. Allah Hafiz.